तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, हो हैरान हूँ मैं दिल तैनू दे बैठी सुन माहिया किवें मैं भुलावा तू मैनू छड़िया किवें मैं भुलावा तू मैनू छड़िया दिल तैनू दे बैठी सुन माहिया जब से पिया लागा जिया बस तू ही तू रहने देना जब से पिया लागा जिया बस तू ही तू रहने देना जब से पिया जब से पिया जब से पिया देविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड लेट मी जस्ट कंग्रेचुलेट यू फर्स्ट दैट योर सॉन्ग इज डूइंग ब्लास्ट. Thank you so much. It's lovely to be here. Yeah, shukriya. Acha Devika, shall we start this interview with your song only, which has been released? Bilkul, yeah. I can hum a few lines. Yeah. Dil tenu de बैठी सुन माहिया किवें मैं भुलावा तू मैनू छड़िया किवें मैं भुलावा तू मैनू छड़िया दिल तैनू दे बैठी सुन माहिया. अच्छा, आपके गाने को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, लाइक इट क्रॉस्ड मिलियन. हाउ यू फीलिंग? आई फील ग्रेट. नहीं मतलब लोगों को बहुत पसंद आया है क्योंकि ये लो-फाई सॉर्ट ऑफ फीलिंग है और बहुत सॉर्ट ऑफ चिल है तो सुन आसानी से सुन भी सकते हैं लोग और उसमें जो इमोशन है आई फील काफी गहरा है तो लोगों को काफी पसंद आया और काफी लोगों ने कनेक्ट किया इस गाने के साथ. जो लिरिक्स है मेरे को लगता है वो इम्पोर्टेंट होते हैं और मेरे ख्याल से वो बहुत स्पेशल है सॉन्ग में. और also जो म्यूजिक है वो काफी it's very sort of new and progressive, right? तो ये जो combination of the lyrics and the music and the chill feel I think has been appreciated. So लोगों को पसंद आया and I feel great. Yeah, I'm so happy and thankful for all the fans who reached out to me जिन्होंने मुझे लिखा है और गाने के बारे में बोला है कि उनको काफी इतना पसंद आया तो yeah, feels great. It's kind of a song. अगर मैं अपने फीलिंग के बारे में बताऊं, मैंने सुना तो it's like you can listen to this every time, everywhere. It's very soothing and beautifully the lyrics has been written. So how this idea clicked you? Yes, I should write this kind of songs. पिछले काफी सालों में somehow I met a lot of people जो they lost somebody that they loved, right? कि उनके साथ कोई था और somehow they decided to part ways और वो it really affected them emotionally. So उनसे मिलके जब जो मुझ पे असर हुआ I just felt like it came out that I had to express that emotion. और फिर it came naturally, right? I was sitting in my music room one day and मैंने किसी से बात की थी और मेरे दिल में ये जो गहरा असर था वो just came out on paper and melody and just that was the start of it. And फिर जब originally मतलब एक main hook और main verse लिख लिया उसके बाद then I was able to sort of develop it further and work with a producer YAHAN in Mumbai and we kind of went back and forth to finish the song. So it was very much like inspired by जो emotion and जो feeling that I was going through at that time. शूट जो आपने कहा किया है इस गाने की वो कहाँ पे किया है? इंडिया में है, बाहर में है?
यूएस में ही शूट किया है. सो आई Hmm. लिव इन सैन फ्रांसिस्को इन द बे एरिया. तो Hmm. वहाँ पे बाय द ओशन बहुत सुंदर छोटे छोटे सॉर्ट ऑफ टाउन्स हैं. Hmm. Hmm. और हमने एक टाउन हाफ मून बे में ये वीडियो शूट किया. तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन बाय द वाटर. Hmm. और दूसरा टाउन है मोनरे. वहाँ पे हमने बाय द ओशन शूट किया. तो जस्ट वांटेड टू क्रिएट लाइक अ वेरी सॉर्ट ऑफ simple and very natural feeling. Hmm. And what more than by the ocean and the water, right? Like you can sort of just imagine that feeling coming over It's you as really you're walking beautiful. by the Yeah, very water. beautiful and elegant. And I loved your dress in that Oh, mustard thank you. kurti. It's really beautiful. That was your choice कि आपने सोचा Yeah. कि I should carry this. Yeah, that was my choice totally. Okay, every time जब भी मैं video करती हूँ, Hmm. it's a really creative exercise, and I like to think कि मतलब क्या हम backdrop क्या है, or how do you bring out the contrast of the colors, right? So against the blue and the black rock, yellow will be really nice, and Hmm. and also it's kind of like a very pretty and gives it sort of like that bright, balanced feel. So Hmm. it was just a lot of fun to sort of pick some outfits. I had a couple of other outfits also, like एक black था दूसरी जगह में. But yeah, Hmm. it was super fun to kind of think about creatively कि कैसी feel होनी चाहिए, Hmm. or how the overall Hmm. impression has to sort of be right and match the vision of the song. Acha, Devika, you thought of being a singer at the age of 7. Until now, how was the journey? Tell us about that. Yeah, it's been lots of learning. काफी adventures हुए हैं, काफी different kinds of music, different music genres मैंने experiment किए हैं. तो जब मैं Hmm. start किया music, Hmm. मैंने हिंदुस्तानी classical music start किया India में. I Hmm. started learning that. और जब मैं US में आई तो मैंने decide किया कि I wanted to present that Indian melody and the folk sort of essence with a Western sound and a contemporary sound, so Hmm. that logo ko ye it's a little more easy to sort of connect with and understand that, right? So मेरी जो first album थी उसमें वो गाना था कहंदे ने नैना, Hmm. which was pretty popular at that time, Hmm. and it was featured in Sony's तेरी दीवानी album, जिसमें Hmm. काफी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, कैलाश खेर, उस्ताद नुसरत Hmm. फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब. So it was really good to be in the company of such great artists, right? Hmm. और उसके बाद फिर that song was really successful, and then दूसरी album record करी, that was a contemporary Sufi album. Hmm. And that was also, kind of chill. I'd say us time ke liye, you might say it was also kind of in the lo-fi genre, but it had, lots of beautiful lyrics, and it was about sort of love, right? And how you kind of think about, love for God and love for somebody you love, and kind of Hmm. how you sort of connect those things. So वो album release हुई सारेगामा के through. और Hmm. उसके बाद मैंने काफी collaborations किए with Bohemia. आपने सुना होगा एक तरह प्यार और दिल, which was Hmm. really popular. Or Beparwa, which was also really nice Punjabi song. So a Hmm. lot of Punjabi collaborations, hip hop genre में. Hmm. And then collaborations with Aman and Ayan Ali Bangash, jo sarod bajate hain, and they're Hmm. just really awesome at that. Hmm. So different songs, or most recently मैंने एक song किया जो it's like a classical electronic sort of presentation of a classical Hindustani classical song का version बनाया हमने, और वो Grammy के लिए submit हुआ था. So that was really 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 exciting also. Hmm. So क्या it's उसके been दो yeah. लाइन आप गुनगुना सकते हैं? So this morning my throat is a little still getting ready. So um, जब से प्यार लागा जिया, बस तू ही तू रहने देना. जब से प्यार लागा जिया, बस तू ही तू रहने देना. जब से पिया, जब से पिया, जब से पिया. देविका, एक और चीज होती है व्हेन यू टॉक अबाउट अ पंजाबी सॉन्ग, तो मन में ना क्लिक हो जाता है भांगड़ा होगा, मस्ती होगी, ये होगी. एंड ऑन द अदर साइड आपके गाने जो सोलफुल मेलोडी है और लोगों को बहुत पसंद आते हैं. तो डोंट यू थिंक कि कभी कभी जब आप सॉन्ग रिलीज कर रहे हो तो एक मन में होता है ना रिस्क टाइप का कि एम आई नॉट टेकिंग दैट रिस्क, क्या वो लोगों को पसंद आएगा नहीं, ऐसा होता है?
पहले शायद होता था, बट नाउ आई जस्ट फील कि मेरे को मुझे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि द सॉन्ग शुड बी समथिंग दैट आई लव, कि वो मुझे it should affect me deeply and I should connect with it. And that is the most important thing, कि जो expression जो मैं share करना चाहती हूँ through the song, वो clearly and it comes through. So it's very important to, and for it to sound the way I feel the quality should be, right? The presentation should be. So I'm really thinking of this as pure music, right? So it's not so much ke it must appeal to everybody, because logo ko different music pasand aata hai, right? So there's everybody likes their own kind of music. In fact, there's so much music out there that I love. There's some music that I don't like, and everybody's similar, right? So sabke apne personal taste hote hain. So I don't expect it should be like, I'm not worried, because I know that there will be some people who love my music, right? And that's what I'm really looking for. So that's what's important, to connect with those people who would enjoy it, and that I would really love what it sounds like, and whether it sort of gets that vision and that expression across. Yes. अच्छा, जब आप गाने लिखती हैं, उनके बारे में सोचती हैं कि मेरा नेक्स्ट म्यूजिक कुछ ऐसा होना चाहिए, इसकी ये स्टोरी होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर आप शांति से बैठ के उसे सुनती हैं, सोचती हैं? हाँ, मेरे घर में I have small music studio room, and वहाँ पे मैं बैठ के लिखती हूँ generally, but some music कहीं पे भी inspiration होती है, क्योंकि काफी बार I've been out somewhere driving or on a walk or something, and you see something, या कुछ सुनते हैं, तो you're like, oh ये, and then you get inspired, and then you have a phone, the phone में you just like start recording, right? So you want to make sure that you don't lose that moment and that idea. But yeah, like when I have to think कि क्या lyrics मैं लिखूं, मैं अपने like home music studio में लिखती हूँ, pen paper, old fashioned style, I guess. और फिर I record, I have a nice setup जो मैं, it helps me sort of just quickly pick up the stuff that I want to record and memorize. Great. I guess in the next video, जो viewers हैं वो वेट करेंगे कि आपके उस स्टूडियो की एक झलक मिले जहाँ से ये क्रिएटिविटी आती है। एक और चीज देविका मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आगे क्या प्लान्स हैं, what else in your bucket list इस गाने के बाद, because it's super duper hit, so people expecting more. Yeah, नहीं, अभी काफी गाने में are in progress. I'm working on a few songs. एक नया song है which I would describe as a Sufi rock, maybe that's the best way to describe the genre. So it's more upbeat, right, than some of the other songs. But agar aap uski emotion and lyrics sunengi, so it'll be very much coming from the heart again, and again sort of comes from some experiences and logo se jo main mili thi and jo effect hua tha mujh pe. So it always comes from like some emotional place. Also working on another song with Holmes, जिनके साथ मैंने वो जब से पिया किया था जो Grammy के लिए submit हुआ था. So that's also a new song that has some Urdu lyrics, but जो उसकी production है वो काफी contemporary and sort of modern, I'd say, kind of a more fun sort of production है. But those are the two interesting songs that are coming up next. And then I'll be shooting some music videos for them, so looking forward to sharing that with everybody. और हम सबको उसका इंतजार रहेगा. So it was really nice talking to you, Devika, and I hope ये गाना जिस तरह से हिट हुआ है, coming on September month में आपके कुछ गाने रिलीज हो रहे हैं, वो भी इसी तरह हिट हो. Thank you and lovely talking to you. Likewise, thank you so much. Thank you.